Question number 15 is how many 5-digit numbers formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 are divisible by 3 if digits are not repeated. ये नहीं हुआ था, 5th वाला है, 15th वाला रह गया था, तो हम लोग वो कर लेते हैं. तो कितने 5-digit नंबर्स है, तो यहाँ पे 5-digit नंबर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं वो पहले हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता है, 5 में से कोई भी एक आ सकता है. अच्छा, रिपीटेशन के बारे में क्या बोला है उन्होंने? नॉट रिपीटेड बोला है. तो यहाँ पे 5 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पे जो इधर आया वो निकल जाए, फिर 0 इंक्लूड होगा, यहाँ पे 5 में से कोई एक, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. So this is 25 into 4 into 6. क्योंकि सारे डिजिट्स मिला के 6 है, 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे जो आ गया है वो यहाँ पे नहीं आएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो यहाँ पे 0 आ गया, वो 5, 4, 3, 2, ऐसे 600 नंबर्स 5-digit नंबर बनेगी. बट वी आर इंटरेस्टेड इन डिविजिबल बाय 3. अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, इसके सम्स थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या हुआ? तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो ऐसे कितने 5 डिजिट्स हम लोग ले सकते हैं सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 3? तो लेट अस सी. 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 डिजिट्स है, इनकी एडिशन क्या हो गई? 7, 9, 10. इट इज नॉट डिविजिबल. सो नेक्स्ट 0, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 नहीं. अच्छा, 0, 2, 3, 4, 5. तो ये 9 and 2 is 12. 9 and 3 is 12. 12 and 4 is 14. So this is also not possible. Then 0, 1, 3, 4, 5. 9 and 3, 12. 12 plus 1. नहीं. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 9, 9 and 3, 12 and this is 15. तो इससे होगा डिविजिबल. ओके, तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 से मैं नंबर बनाऊं तो वो 3 से डिविजिबल होगा. तो 5 डिजिट्स 5 प्लेसेस पे कैसे बैठेंगे? यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 because there is no repetition. These are 120. ओके, इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, अभी 3 नहीं है, ऐसा देख लेते हैं. 1, 0, 1, 2, 4, 5. इससे होगा 2, 3, 4, 5. इधर 0 नहीं आ सकता, इधर 4 में से कुछ एक आएगा, इधर 4 आएंगे, 3, 2, 1. So 4 into 24, that is 96. और 4 अगर नहीं होगा तो 0, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11. No, this is not possible. हाँ, ये वाला तो हो गया है ऑलरेडी. और अगर 5 नहीं है तो वो भी हो गया है. तो सिर्फ इतने ही नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 3. तो 120 plus 96 by fundamental principle we will add them. So 120 plus 96, that will be 216. So total 216 numbers which are divisible by 3 can be formed here. Now the concept of permutation. Permutation means when out of n objects, we have to select r objects. Here r is always less than or equal to n. And arrange them in a given order. Given order can be a straight line or a circle. It is called as permutation of n objects taken
R at a time. This is called as permutation. It is always given like this, NPR. This means permutation of n objects taken R at a time. Here we should remember one thing, that R is always less than equal to n, क्योंकि अगर 6 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें से आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3, 4, 5 या 6, लेकिन 6 ऑब्जेक्ट्स में से आप 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कभी और अरेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे दो चीजें आती है परम्यूटेशन में. एक होता है, वन इज सिलेक्शन and second is arrangement. आप सिलेक्ट कर रहे हो और फिर आप उन्हें अरेंज कर रहे हो. दिस इज परम्यूटेशन. परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम. अब इसके कुछ टाइप्स है जो हम लोग देखेंगे. एंड द फर्स्ट टाइप इज permutation of n objects taken all at a time. It is NPN. Permutation of n objects taken all at a time, that is n factorial. This is very important. So if I have to arrange, for example, if I have to arrange 10 objects taken 10 at a time, then this can be done in 10 factorial ways. Okay, we can arrange 10 objects taken 10 at a time in 10 factorial ways. Very easy. Second type of permutation. Permutation of n objects taken R at a time. Here R is less than n. Okay, मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ही लेके सिलेक्ट करके अरेंज करने हैं. So permutation of n objects taken R at a time, it is given as NPR. NPR is n factorial R factorial, sorry, n factorial n minus R factorial. Okay, NPR, n factorial n minus R factorial. This is permutation of n objects taken R at a time. Now these are two very important things. अभी ये मैंने अगर ऐसे बोला कि out of 10 objects select and arrange 6 objects, then this can be done in 10p6, that is 10 factorial 10 minus 6 factorial, 10 factorial upon 4 factorial. I can write it as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. This is cancelled. This is your answer. इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ मैं. अगर हम लोग बोलते हैं कि 10p6, तो क्या करना है, 10 को लेके उसके पहले के 6 नंबर्स लिखने हैं. मतलब 10 into 9 into 8 into 7 into 5 into 6 into 5 हो गया 6 नंबर्स. वही तो आया. तो अगर मैंने आपको बोला कि 5p3, तो 5 को पकड़ के पहले के 3 नंबर लिख लो, 5 4 3, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही आने वाला है 3 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. So these are two basic permutation formulas. Permutation of n objects taken all at a time and permutation of n objects taken R at a time. Solve 6.3 based on permutation. Find n if np6 as to np3 is 120 as to 1.
6.3 का first sum, NP6 as to NP3 is equals to 120 as to 1. This NP6 is NP6 upon NP3 is equals to 120 upon 1. N factorial n minus 6 factorial upon n factorial n minus 3 factorial is equals to 120. This and this will get cancelled. This becomes n minus 3 factorial upon n minus 6 factorial is equals to 120. This will be n minus 3, n minus 4, n minus 5, n minus 6 factorial upon n minus 6 factorial is equals to 120. ये cancel हो गया. These are three consecutive numbers, n minus 3, n minus 4, n minus 5 and 120. So we need to find out 120 as a multiple of three consecutive number. That will become 6 into 5 into 4. So n minus 3 is 6, n is equals to 9. This is your answer. This is how we can solve these sums. अभी आपको पता चलेगा कि 6.2 में वो जो फैक्टोरियल का बहुत सारा आपको दिया था सम, वो इसके लिए दिया था ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए आपकी. Let us go with the next one. Find m and n if m plus n p2 and m minus n p2 is equals to 2. So उन्होंने बोला m and n find करो. M plus n p2 is equals to 56 and m minus n p2 that is equal to 12. Now m plus n p2, so it will be m plus n factorial upon m plus n minus 2 factorial. This is 56. I can say this is m plus n minus 1, m plus n minus 2 factorial upon m plus n minus 2 factorial is equals to 56. This and this will get cancelled. M plus n minus 1 is equals to 8 into 7. M plus n is equals to 8. Now this will become m minus n p2, that will be m minus n factorial upon m minus n minus 2 factorial, that is equal to 12. So this is m minus n minus 1, m minus n minus 2 factorial upon m minus n minus 2 factorial is equals to 12. This and this will get cancelled. M minus n minus 1 is 12. 12 can be also written as multiplication of two consecutive number. 4 into 3. So m minus n is 4. So now I have got two equations. M plus n is 8. M minus n is 4. I will add them. I will get 2m. This will get cancelled. This is 12. M is equals to 6. 6 plus n is equals to 8. N is equals to 2. तो m और n की वैल्यू आ गई. Sum is done. Find r if 12p r minus 2 as to 11p r minus 1 is 3 as to 40. Third sum is find r when 12p r minus 2 as to 11p r minus 1 is 3 as to 14. So this is 12 factorial upon 12 minus r minus 2 factorial whole thing upon 11 factorial upon 11 minus r minus 1 factorial is equals to 3 by 14.
This will go up and multiply with the numerator. This will come down. So you will get 12 factorial into 11 minus r plus 1 factorial whole thing upon 11 factorial into 12 minus r plus 2 factorial is equals to 3 by 14. I can write down this as 12 into 11 factorial. This will be 12 minus r factorial whole thing upon 11 factorial. This is 14 minus r factorial is equals to 3 by 14. अब 14 माइनस आर ये बड़ा नंबर है या 12 माइनस आर बड़ा नंबर? 14 माइनस आर, तो ये 11 और 11 तो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 12. This 12 minus r factorial, this will be 14 minus r, 13 minus r, 12 minus r factorial is equals to 3 by 14. तो ये और ये कैंसिल हो गया. Now I can say that 12 into 14 upon 3 is equals to 14 minus r, 13 minus r. This is 4. I will get 14 minus r into 13 minus r is equals to, this is 14 4 are, this is 56. But 56 can be written as 8 into 7. क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो मैं इन्हें भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर की तरह लिख देती हूँ. तो 14 minus r is 8. So r is 14 minus 8, that is 6. So r आ गया आपको 6. This is your answer. Let us take the fourth one. Show that n plus 1 npr is equals to n minus r plus 1 n plus 1 pr. This is actually a property, but now they have asked us to prove, so we will prove. N plus 1 pr. Sorry, this is n plus 1 npr is equals to n minus r plus 1 n plus 1 pr. So this can be written as n plus 1 npr is n factorial n minus r factorial. Now n plus 1 n factorial can be written as n plus 1 factorial upon n minus r factorial. देखो n plus 1 n factorial, can we write it as n plus 1 factorial? 6 into 5 factorial is 6 factorial. So वैसे ही इसको हम लोगों ने लिख लिया. अब ये हो गया आपका LHS. अब हम लोग RHS को ले लेते हैं. n minus r plus 1 n plus 1 factorial upon n plus 1 minus r factorial. n plus 1 n npr क्या होता है? n factorial upon n minus r factorial. So this we can write as n minus r plus 1 n plus 1 factorial. This I will say n minus r plus 1 n minus r factorial. -1 इधर इसमें कर दिया तो मेरे को ये मिलेगा. ये कैंसिल हो गया. ये है आपका RHS. LHS is equals to RHS. Proved. Okay.